दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे फाउंडर से बात करूंगा जिसने इंजीनियरिंग छोड़ के अपने खुद का परफ्यूम का बिजनेस चालू किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया और देखते ही देखते सिर्फ 5 सालों के अंदर करोड़ों रुपए की ई कॉमर्स ब्रांड बना दी। आज ऑनलाइन इनकी एक जबरदस्त वेबसाइट है, ऑफलाइन 30 से ज्यादा स्टोर्स है। सिर्फ 5 सालों के अंदर इन्होंने अपनी यूनिक स्टार्टअप आइडिया से धूम मचा के रख दी है। आज हमारे साथ है MYOP के फाउंडर रेहान अब्दुल रहमान जी। दोस्तों रेहान जी साउथ इंडिया से, तो इस इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। अगर कुछ लोगों को इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं भी आती है तो मैं बोलूंगा कैप्शन को अच्छे से पढ़ो, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अब MYOP के बारे में बता देता हूँ। MYOP का फुल फॉर्म है मेक योर ओन परफ्यूम। इनका बिजनेस आइडिया बहुत यूनिक है। कोई भी पर्सन अपने हिसाब से अपना परफ्यूम कस्टमाइज कर सकता है और अपने नाम के साथ अपनी बोतल के साथ परफ्यूम खरीद सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना चला कि इन्होंने हर स्टोर में परफ्यूम बार्स बनाए हुए हैं, लोग अपने हिसाब से परफ्यूम अपना बना सकते हैं। आज हम इस इंटरव्यू में इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से इनका बिजनेस का प्रोसेस वर्क करता है, क्या इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से ये प्रॉफिट कमाते हैं। ये सारी चीजें आज इस इंटरव्यू में इनसे सीखने को मिलेगी। हम सब चीज पूछेंगे। इस इंटरव्यू से सीख के आप भी अपने खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। अब सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा कि आपको आइडिया किस तरीके से आया, आपने स्टार्ट किस तरीके से किया इस बिजनेस को। So, हमारा ब्रांड का नाम है मेक योर ओन परफ्यूम, in short we call it MYOP. We are a direct to consumer perfume retail brand. हमारा as of today we have 30 outlets across Kerala, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Tamil Nadu. मैं बिजनेस शुरू करने से पहले I was a software engineer in Bangalore and उस काम की दौरान मेरे को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा था। In one of those travels, I had been to Iran, Tehran. वहाँ पे मेरे को ये आइडिया मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये आइडिया क्योंकि परफ्यूम इंडस्ट्री में काफ़ी वेस्टेज होता था। And this kinds of eliminates that process and brings in efficiency into business. तो मेरे को आइडिया वहाँ से मिला and once I got the idea, ट्रैवल करने के बाद वापस आके I have a brother, he is my co-founder and partner, Naveed. I went and discussed the idea with him. At that point of time, वो एक सिल्वर ज्वेलरी में जनरल मैनेजर के पोजीशन में काम करता था and they used to do similar business. Similar business का मतलब they were also into retail business. तो I went and pitched the idea to him. उसने हाँ बोला and सोच रहा था कि एक स्टोर खोल के ट्राई करेंगे, अगर चला तो we'll make it a full-time business. And in 2017 December, we opened our first store in Focus on Connecticut. And that is how we started. And we grew slowly and steadily. As of now, we have 30 outlets across Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra and Telangana. So, एक चीज तो सेट है कि परफ्यूम का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, लगभग 4000 करोड़ का मार्केट है और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो अपने खुद का परफ्यूम ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। तो एक चीज तो है कि परफ्यूम एज अ प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपने जो आइडिया लेके आया है कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड परफ्यूम का, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है? परफ्यूम एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि हर इंसान को एक ही परफ्यूम अलग अलग डिफरेंट, देयर इंटरप्रिटेशन विल डिफर। व्हाई पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड परफ्यूम इज कि अगर मैं ब्लैक कुर्ता बेच रहा हूँ तो सबको ब्लैक कुर्ता ब्लैक ही दिखेगा ना। So that perspective is the same for everyone. Perfume में वो that is not the reference. So we have different type of perfumes and citrus is a type of note in perfume. So citrus मतलब lemon का smell. Now as people are into perfumes, we have different type of citrus note. Mandarin orange, Nagpur citrus. There's different type of citrus notes. Only a person who has smelled the Mandarin orange before will be able to refer to the exact note. So because of that, everyone's interpretation of a single perfume is very different, and that was a very interesting challenge to break. Or second and a very important part is when we look at perfume, every product has two perspectives to it. One is the functional aspect of the product. Second is the design aspect of the product. The functional aspect of any product is same for everyone who use the product. मानो कि I want to buy a watch. Everyone who wants to buy a watch wants to buy a watch for एक ही reason कि I want to see the time. और दूसरा perspective है कि I want to like the watch, which is the design perspective of the watch. Perfume is one such product कि ये दोनों merge हो जाता है कि everyone wants to use perfume because I want to smell good. But the good perspective, good part of being a perfume is very subjective. So because of that,
there's no fine rule which says that this is the good perfume or that is a bad perfume. So it is very subjective, and because of this, customization has got a huge scope in it. And since perfume is a very gifted segment, we वहाँ से थोड़ा extend करके हम we got into personalized perfume where you can buy a perfume from MYOP wherein you can have your loved one's name on it. Imagine मानो कि you're giving your wife a gift and you can give her from if you're buying from MYOP, you can gift her a perfume that she likes and all with her name embossed on the bottle, which is a very intriguing gifting solution. It was actually fun. The idea came across कि my partner wanted to gift his wife a wedding anniversary gift, and he had done it himself, and she really liked it. And वहाँ से idea spark हुआ personalized perfume का. So we went from customization to one level ahead to personalization. अब ना रियान जी, मैं थोड़ा सा ना सीक्रेट पूछने वाला हूँ बिजनेस का, कि आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है. So we are a direct to consumer brand. We have 29 outlets as of today. All the outlets are fully owned and operated by us. We do not have any franchising model, or nor do we have any investors. It's a completely bootstrapped company where we have completely pooled our money and profit को reinvest करके हमने grow किया है. All the reason why we had to do this is it's a very first of its kind that what we're doing. So a lot of processes are very tailor made for us, and we use a lot of technology to make sure that we streamline the process. तो ये फ्रेंचाइजी के हाथ में एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा, इसलिए ये kept it under a single umbrella. इस प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है और क्या ये सही समय है अपने खुद का परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करने का? Perfume a good idea, good business idea or not? I am not sure. Okay. We found the idea to be interesting, and you have to do what you like. So that is the reason for us to get into perfumery. Indian market हमेशा India is a very cost sensitive market, and India has traditionally been एक market जहाँ पे pricing बहुत pricing sensitive लोग होता था, और the decisions were solely based on prices. And India is currently changing from that to a mature market where quality is people aspire to use product with good quality. And because of that, हमारा मानना है कि we are a direct D2C brand, so we could directly import the perfumes from Europe, and we sell good quality products at a reasonable price. I think any business that starts in India at this point of time has got a good potential if they are giving a good quality product at a reasonable price. Any brand, whether it be mobile, whether it be perfumes, whether it be watches, I think that space has opened up in India. The middle class booming, the number of people, salary लोग expanding. I think वो वाला market में बढ़ रहा है. So I think it is a great time to do business in India with the introduction of GST and everything. बहुत सारा process बहुत streamlined हो गया है. That becomes very easy to the growing market of the middle class and the upper middle class in India who aspire to use a better quality product than the very regular in India जो हमेशा price sensitive थे. That market is very growing rapidly. I think it's a great time to do business in India now. आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है और आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूनिक है. अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, परफ्यूम को ऑनलाइन सेल करने के लिए बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? That is a very difficult. So we are primarily a retail brand. We do have an online presence. www.myop.in is our website, but we roughly do only 5 to 8% of our total revenue comes from online. बाकी सब retail से है. And the problem is perfume is a very difficult product to sell online. When you're buying a shirt, as I said, there are two aspects to it. The functional aspect is to cover your body, जो हर shirt करता है. And the design aspect is there are two design aspects. One, do you like the share? So अगर website पे you buying a shirt and you put an image of a person wearing the shirt, आपको थोड़ा you can assume that हाँ मैं if I wear this shirt मुझे ऐसे दिखेगा. The only problem that comes is fittings सही है नहीं है. पर परफ्यूम में ये this is completely different, because the entire idea of perfume is it is very difficult to communicate over website ki how does this perfume sell. We have been trying to do this, and I don't consider ourselves successfully I don't think we have successfully done it yet,
We are constantly working on it. As we speak, we are doing a project जहाँ पे we are trying to make a pictorial representation of our evolution. Is initially in our websites, we used to try to depict perfumes with color palettes. वो कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं हुआ, फिर वी वेंट फ्रॉम देयर टू एन एब्स्ट्रैक्ट इमेज. सो अगर अभी हमारा वेबसाइट खोल के आप देखेगा तो परफ्यूम्स के जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज बना के हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वी डोंट थिंक इवन दैट इज जेन्युइन. सो वी आर मूविंग नेक्स्ट टू अ वेरी क्लियर image of a perfume with which designs which gives two perspectives of the perfume, the use cases of the perfume and the ingredients of the perfume in a pictorial format, and that's what we are trying to do. I think selling perfume online has always been a very very difficult job, and I don't think we have successfully done it yet. It is going to be an interesting journey. इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट आई थी, और किसी भी पर्सन को अगर परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? So हमारा प्राइमरी इन्वेस्टमेंट हमारा रिटेल चेन होता है, एंड वी डू ऑल आवर आउटलेट्स आर इन फिनिक्स एंड इन ऑर्बिट्स एंड नेक्सस मॉल्स ऑफ द कंट्री. To start any store in any of these malls, it's a small. There are two formats that is typically done in these malls. One is called a kiosk format, when there is an open store, which will cost you somewhere between 25 to 35 lakhs. And the second is a store. A store is a very expensive format, which will cost you somewhere between 60 to 80 lakhs. That is the investment for one store. So capital investment काफी heavy है. अच्छा, ये जो परफ्यूम का बिजनेस है इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? The profit margins, perfumes are good. You can make up to 40-45% profits, but the difficulty is the efficiency in execution. Perfume में problem क्या है कि minimum order quantity बहुत ज़्यादा है. I'm talking about when we purchase, when someone is starting out, MOQs are very high. तो आपको बहुत ज़्यादा quantity procure करके रखना पड़ता है, और ये माल बेचेगा या नहीं बेचेगा, that you get to know only after going to the market. So that becomes the most difficult part of this business. Inventory and perfume का one more very specific problem is आपको perfume खरीदना है the compound, you will get it at 800 rupees per kilo. You will also get it at 80,000 rupees per kilo. So depends on the quality that you are focusing. We are focusing on the high quality stuff. So margins is good, but MOQs और capital थोड़ा intensive है. ध्यान जी, आई मस्ट से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपने बताई है इस इंटरव्यू में. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद सोशल सेलर एकेडमी. आपने जितनी भी चीज़ें आज गाइड की है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है. वो अपने ब्रांड्स में, वो स्ट्रैटेजीज़ को, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू सोशल सेलर एकेडमी. तो ये थे दोस्तों हमारे परफ्यूम ब्रांड के फाउंडर, जिन्होंने 5 साल के अंदर करोड़ों रुपए का अपने परफ्यूम को ऑनलाइन बिजनेस बना दिया. ऑनलाइन और ऑफलाइन आज दोनों बिजनेस रन कर रहे हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ. इससे ये समझ आता है कि अगर आपका आइडिया यूनिक है और आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में घुस के आप ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो. इसी तरीके की आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सोशल सेलर कम्युनिटी से जुड़ सकते हो. कम्युनिटी के अंदर हम हर हफ्ते लाइव सेशंस करते हैं, नए नए स्ट्रैटेजीज बताते हैं, नए नए टूल्स के बारे में बताते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताते हैं, नए नए सप्लायर्स के बारे में बताते हैं. तो अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाहते हैं, सोशल सेलर कम्युनिटी से जुड़ जाइए. नीचे लिंक है, लिंक से जाके आप सिर्फ 300 रुपये पर मंथ में सोशल सेलर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो. इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमेशा बोलता हूँ सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं अगली वीडियो में.